Goes with the headlines and the word meaning as well. Okay. Take it. One person please come from this side. Headlines. Good morning, everyone. Very good afternoon. Good morning, everyone. I'm Rahul. Today I'm gonna read the news article which is Headlines. Jugar walks out of the jail as Supreme Court grants interim bail in all FIRs. Okay. Two Moose Wala killer shot dead in Punjab encounter. Okay. Supreme Court stays FIR against 30 army men over 30 deaths in Nagaland operation. Patna High Court seeks feasibility reports on Feasibility. Right, one Isn't airport in It's a state. very important word. Wait. Feasibility. FEA. SIBILIT. Write this word feasibility. Okay. Pune grandma pays emotional visit to Pindi home 75 years later. Next page. Look all this. Court disbands UP SIT cases moved to Delhi. Supreme Court Maharashtra political flux needs 5-judge bench Adjudication. adjudication. Sorry. Jharkhand SI moved down by cattle There is one smuggling word van. There is one word called jurisdiction. Yes, sir. Adjudication. Adjudication. Okay. 2 die, 469 test positive for COVID in state. UP Mantri offers to quit citing draft. Okay. Next page. High Court 6 Feasibility report on international airport. High Court 6 feasibility report on international airport. High Court orders state to preserve historical Buildings. buildings. 2 die, 400 kids facility opened on Vikas Bhavan premises. Dry spell ends with light rain. Abandoned land at cheaper rates to set up industries in state ministry. Man masquerading as senior police officer arrested in the city. Minister launches app for monitoring road projects. Traders and shopkeepers still use single-use plastic. Center draws flock over GST on packaged food products. Nadda to open 3-day BJP morchas meet on July 30. JDU question government defense on Agniveer's cast. 2 girls found dead in Siwan and Gopalganj. Sahani and 6 other MLCs retired today. Last rites of Captain Anand performed. Spurious leaker claims took lives. Okay. Spurious. Sleeper cells state to destabilize country. BJP chief. Okay. Thank you. Next from here. Next page. Headlines. Chal. Good morning, everyone. Jurisdiction. Today's headlines about government not avoiding GST debate OPN or competing to disrupt House Goel. Most unparliamentary government says Kong. Unparliamentary. Parliamentary. In later PM louds all vaccinators for 200 CR job milestone. 200 crore job jab milestone. Cattle smugglers mow down women SI 32 in Ranchi.
in bid to evade scrutiny, truck runs over Gujarat Corp. Gujarat Corp. Unparted all set to celebrate making of presidential history. SC paves way for OBC quota in Maha local body election. 5 judge bench may be needed to hear Maha petitions top court. Maharashtra petition. First batch of 8 cheetah to arrived from Namibia. It's a country. Vikram Singhal voted in as new SL praise protest muted. Thailand's admit to using phone spyware cities national security. Race to become UK PM down to final to Sunak and Truss. Wildfires race on in Europe's hundreds flee. Britain counts cost of hottest day ever. Sailing on as waste wonders if Russia will restart gas pipeline. Students see Ukraine's desire to fulfill terms of peace deal Putin. PM pack rupee are preserved by politics not fundamentals. Micronesia likely last of the bigger countries to see COVID outbreak. Australian surge to WFS as Omicron waves swamps hops. Quadit is now quadball or rollings trends now behind name switch. Thank you. Chalo. Wait. Okay. Go. 3. 1, 2, 3. Headline. Hello everyone, good morning. UK inflation rises to 9.4% on food prices. Highest in 40 years. BOE set to hike rate. London. Surging petrol and food. BOE is Bank of England. Okay. Surging petrol and food prices last month pushed British inflation to its highest. Surging. Highest rate in 40 years, according to Surging means official increasing. figures. Okay, wait. See, these a few words I have written on the board. Right, as you can see on the screen. Right. Okay, fine. The first one happens to be feasibility, right? Now, feasibility happens to be a very technical word for your people. Very technical word. Feasibility means उसको होने योग्य. That is की feasibility report. कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे जा रहे हैं, तो उसका feasibility report मांगा जाएगा आपसे. ये कैसे होगा? ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये प्लॉट है. इसका feasibility report दिए कि इस प्लॉट पे बिल्डिंग कैसे बनेगी. सेकंड एग्जांपल, ओवर इससे बन रहा है या बना, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगा होगा कि इसको आप कैसे करेंगे. बात सुना रहा है? ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो दिस व्हाट हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीपल. फिजिबिलिटी, किसी भी काम को करने से पहले आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगा जाएगा, स्पेशली पीजीडीएम. क्लियर है? एनी प्रोजेक्ट विच, ठीक है, तो गिव द फिजिबिलिटी रिपोर्ट. ठीक है, ओके फाइन. व्हाट डू यू मीन बाय जुरिसडिक्शन? Before planning related. Jurisdiction, this what? No. So before planning related, make report. Jurisdiction is उनके अंतर्गत. अभी जैसे ये क्लास मेरे jurisdiction में. This class is under my jurisdiction. Clear? तो jurisdiction is a very important word. जो भी project आपके jurisdiction में दिया जाएगा, ठीक है? You have to give the report, you have to talk about it, and you have to present all the things. Clear है?
Next what happens to be premises. What do you mean premises? Premises. Premises please. Premises. नहीं, premises means जैसे ये सीमेज का premise है, ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो कोई भी प्लान होता है ना, प्लान, कोई भी प्लान बनाएंगे तो प्लान का प्रेमाइस आप लोग को बनाना होगा। प्लान का वो प्लानिंग कहाँ कहाँ तक आपको एक्सटेंड करना है, द बाउंड्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रेमाइसेस मींस यू नो द बिल्डिंग एंड द बाउंड्रीज, ये बेहतर होगा, बाउंड्रीज, ठीक है। ओके फाइन। नाउ व्हाट इज स्प्यूरियस? नाउ दिस इज वेरी टेक्निकल। स्प्यूरियस, क्योंकि न्यूज है कि स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स, स्प्यूरियस लिकर केडी नॉट मेनी पीपल, स्प्यूरियस PGDM, स्प्यूरियस, इसमें डैश करके लिखिए, ये एग्जांपल से आपको समझ। दिस वन बिस्लेरी, और एकदम सेम साइज, सब कुछ सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर दिया, बिलसारी, ठीक है। तो बिलसारी इज नॉट बिस्लेरी, दैट हैपेंस टू बी स्प्यूरियस। तो एग्जैक्ट नकली नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लोज टू नकली, ताकि लोग को छलावा दिया जा सके कि एक्चुअली बिस्लेरी है, क्योंकि फॉन्ट साइज, कलर वो सब सेम है, ठीक है। निर्मा हैपेंस टू बी निर्माना, चलो ठीक है। The spurious products, you know, these are very dangerous. Okay. Now come to unparliamentary. Unparliamentary. What is unparliamentary? Unparliamentary. Parliament illegal. ठीक है। तो unparliamentary is a word of illegal and unconstitutional. हम लोग आपस के बोल जैसे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ अपशब्द का प्रयोग किया हमने, दैट इज अनपार्लियामेंट्री, दैट इज इलीगल, राइट। तो ये सब पार्लियामेंट्री को आप समझिए, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम लोग बड़े हो गए, स्कूल खत्म हो गया, तो नाउ वी आर अंडर द आइज ऑफ IPC। बच्चे थे तो IPC कोड में नहीं आ रहा था ना, अब हम लोग आ गए, अब केस फ्रेम हो जाएगा, क्लियर रहेगा, फाइन। What is the next word? Milestone. Milestone happens to be very important word. Achievement. Point. ठीक है, जिसको आपको कवर करना है। जैसे एक माइलस्टोन कवर हुआ, चलिए 10 दे दिया हमने, अनदर माइलस्टोन +2 क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड माइलस्टोन ग्रेजुएशन और PGDM, देन जॉब। तो these are all the milestones, these are the points which we need to cover, ठीक है। Okay. Next is surging is increasing, you know, raising. चलिए, सबसे इस कलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो रहा, दैट इज फिजिबिलिटी। और फिजिबिलिटी को आप लोग डैश करके इकोनॉमिक्स भी लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स, फाइन। दैट इज योर मैनेजर विल से दैट प्लीज एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स, प्लीज एक्सप्लेन द, आप ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, आइदर ही विल से गिविंग द फिजिबिलिटी रिपोर्ट और प्लीज एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है ये काम कैसे होगा, क्लियर? नाउ वी गो। A rare half percentage point Bank of England थोड़ा जोर से। interest rate hike next month. The Office for National Statistics said annual consumer price inflation. जब फिजिबिलिटी वर्ड आ गया है तो बहुत सारा वर्ड भी आ जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। फिजिबिलिटी, हाँ, इकोनॉमिक्स वर्ड क्लियर है? यस सर। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट शब्द, जैसे हमने जो प्रोजेक्ट किया और हम बोलेंगे प्लीज एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स, इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो फिजिबिलिटी का मतलब होने योग्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी? मैन्युफैक्चरेबिलिटी, प्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। जितना जो एबिलिटी वर्ड जुड़ता जाएगा, एबिलिटी, यू नो, ठीक है, व्हाट विल द मीनिंग? उसको करने योग्य, उसको करने योग्य। मैन्युफैक्चरेबिलिटी मीन्स मैन्युफैक्चर करने योग्य, क्लियर। ऐसा डिजाइन मत बनाइए, ऐसा डिजाइन जो मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सके, ऐसा रॉ मटेरियल का सिलेक्शन नहीं कीजिए जो मैन्युफैक्चर नहीं हो सके, राइट।
ऐसा स्किल्ड लेबर का नहीं सिलेक्शन कीजिए जिससे मैन्युफैक्चर करने में आसानी प्रॉब्लम हो। बात समझ में आ रहा है? इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, इट शुड बी वेरी इजी सो दैट मैन्युफैक्चरेबिलिटी हो सके। ऐसा कोई प्लान नहीं ओवर एम्बिशियस जो नहीं हो सके। क्लियर? तो दिस इज फिजिबिलिटी एंड ऑल अबाउट। ठीक, अब पढ़िए बाबू। The Office for National Statistics said annual consumer price inflation rose in June to 9.4%, the highest since February 1982, up from May's 9.1% and above the 9.3% consensus in a poll of economists. Write another word, consensus. CONSENSUS, consensus मतलब सबकी सहमति, सबकी सहमति। हाँ, consensus। हाँ, consensus। वही तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। एक मिनट, स्कूल नहीं है ना? स्कूल खत्म हो गया ना? हाँ, स्पेलिंग भी खत्म हो गया। अब हम उच्चारण करेंगे, रिलैक्स, उच्चारण कर देंगे। तुम पकड़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? कंसेंसस, SUS, CONSENSUS। पढ़िए बाबू। The latest increase means Britain had the highest rate of inflation seen in any group of 7 advanced economies since 1985. Although many smaller European Union countries are currently seeing even faster growth in prices, Wednesday's data bolstered bets that a Bank of England will opt for a 50 bps rate hike next month, which would be the biggest since 1995. The European Central Bank is considering such a move this week, sources said on Tuesday. Bank of England Governor Andrew Bailey on Tuesday said that scale of borrowing costs increase was on the table but not locked in. The Bank of England has raised rates 5 times since December as it tries to stop the surge in inflation from becoming embedded in Britain's economy, and it is expected to increase them again on August 4. Soaring inflation means that momentum for a half-point interest Write rate. the word momentum. Momentum. Interest rate rise. Momentum. MOMEN. ठीक है, TUM। Half-point interest rate rise in August is growing. What's this? Here, Suren Thiru, Suren Thiru, Economic Director of Accountancy Trade Body. ICAEW said, however, tightening monetary policy too aggressively increases the risk of recession and will do little to address the global recession, RECESSION. What is the meaning of that recession? आर्थिक मंदी। तो रिसेशन थोड़ा बहुत डिग्री हमेशा चलता रहता है और कुछ पॉइंट आता है जहाँ पे बहुत ट्रिगर हो जाता है। कोरोना ने ट्रिगर कर दिया उसको, आर्थिक मंदी। ठीक है, रिसेशन चलता रहता है, उसी में भी आप तो स्विंग। चलिए। And will do little to address the global factors driving this inflationary surge. Investors now see an almost 100% chance of the Bank of England raising the bank rate to 1.75% from 1.25% next month. It said in June that it was ready to act forcefully if needed. The ONS said core inflation in June fell to 5.8% from 5.9% in May.
in line with the poll median forecast, which could reassure Bank of England rate setters who might be reluctant to hike rate more aggressively. The ONS pointed to a 42% year-on-year rise in petrol prices and almost 10% increase in food prices as the main drivers of inflation last month. A hammer blew for families on low incomes. The Resolution Foundation think tank said inflation for this group had already passed into double digits. The cost of living crunch has triggered a wave in Triggered. It's a very important word. Triggered. 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 ठीक है, मतलब बढ़ जाना. जैसे रिसेशन चल रहा है, कोरोना ने उसको ट्रिगर कर दिया और आर्थिक मंदी को बढ़ा दिया. क्लियर? फाइन. फ्लड ने ट्रिगर कर दिया. क्लियर? तो बहुत सारा ट्रिगर पॉइंट्स आता रहता है. व्हाट इज योर प्लान टू सर्वाइव? व्हाट इज योर प्लान बी? प्लान ए तो आपने बनाया सर्टेन सिचुएशन को लेकर के. सर्टेन सिचुएशन अनसर्टेन हो गया तो व्हाट इज योर प्लान? सिचुएशन अनसर्टेन तो प्लान बी होना चाहिए. दैट्स इट. चलिए. triggered a wave of industrial action by trade unions and been hotly debated among the three remaining candidates in the race to replace Boris Johnson as Prime Minister. Two are promising immediate tax cuts, something the other contender, former Finance Minister Rishi Sunak, says risk fueling inflation. There were signs of further inflation pressure ahead in Wednesday's figures. Prices paid by factories for अब materials. आपका इंग्लैंड में इलेक्शन हो रहा है ना, तो वो चुना जिसका बेहतर इकोनॉमिक्स होगा, वो चुना जाएगा. बात समझ में आया? नो. अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो जो बेहतर इकोनॉमिक्स प्रेजेंट करेगा कि हम इस महंगाई को हम कवर करेंगे, तो सुनक एंड ट्रोसन दो लोग अभी फाइनल हो रहे हैं. तो जिनका बेहतर इकोनॉमिक्स होगा वो चुने जाएंगे. आप समझ इकोनॉमिक्स. Prices paid by factories for materials and energy, a key determinant of prices later paid by consumers in shops. Write the word determinant. 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 This is very important word. Determinant. NANT. NA. What will the meaning? क्या मतलब होगा इसका determinant का? Determining something. Determinant का meaning? Determinant. Determinant, please. Factors. Determinant means, ठीक है, क्या क्या फैक्टर है जो उस चीज को अफेक्ट करता है, उस चीज को. ठीक है, इसमें एक असाइनमेंट लिखिए आप लोग. यू ऑल विल फाइंड इट आउट. ठीक है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप लोग खोजिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़िए वो. Were 24% higher in June than a year earlier, the biggest increase since these records began in 1985. The ONS said prices charged by factories jumped 16.5%, the most since September 1977. In response to data, Finance Minister Nadavi said Britain was not alone in facing runaway in inflation and the government was joining forces with Bank of England to tackle problem. Thank you. Thank you. So, words का word meaning we have to do a lot of collection, right? And we need to understand the exact meaning of that word. Clear है?
किसी भी वर्ड का सिर्फ उसका हिंदी ट्रांसलेशन सॉल्व नहीं करता है. क्लियर? वी नीड टू अंडरस्टैंड उसका एग्जैक्टली जिस्ट क्या है, उसका फ्लक्स क्या है. ठीक है, उसका मेन सोल क्या है उस वर्ड का. चलिए इसको पढ़ो तुम. फॉल अगेंस्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये आपके हिस्से में आएगा, आपसे पूछा जाएगा. मान लीजिए घर में शादी हो रही है, राइट? आपको फंड दिया जाएगा, तो फंड देने से पहले 4 सवाल पूछा जाएगा, कैसे करोगे जो भी काम आपके हिस्से में आएगा. हियर इज फिजिबिलिटी. क्लियर? एंड हियर इज इकोनॉमिक्स. और अगर आप बेहतर इकोनॉमिक्स नहीं प्रेजेंट कर पाइएगा तो फिर वो फंड दूसरे को डाइवर्ट किया जाता है कि ना इससे नहीं होगा, ये भी बच्चा है. ये बात हुई ना. दिस वर्ड हैज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको पढ़िए. रुपी फॉल अगेंस्ट. Good morning, everyone. My name is Good morning, everyone. My name is Shreya, and today's headline is Rupees fall against dollar lower than other major currencies. New Delhi. Chief Economic Advisor CEA V. Anant Nageshwara on Wednesday said that the depreciation of the rupees against the US dollar has been lower than other major global currencies. Such as the euro, the British pound, and the Japanese yen. The attributes depreciations in rupees and other currencies against the US dollar to the aggressive monetary tightening by the US Federal Reserve. As a result, outflow of foreign capital is taking place from various economies including India, putting pressure on their domestic currencies. Japanese yen, euro, Swiss francs, British pound have depreciated much more against dollar than the rupees. He said on the sidelines of an event here, both the government and RBI have taken measures to check the outflow of dollars and encourage inflow of foreign pounds so that the depreciation of the domestic currency can be contained. He said earlier this month, the Reserve Bank of India RBI announced new liberalized rule to attack foreign inflows. Besides, the government has also raised import duty on gold imports. The RBI raised the overseas borrowing limits of companies and liberalized norms for foreign investment in government bond as it announced a slew of measures to boost foreign exchange inflows. It has also increased interest rate in recent months, thus increasing the attractiveness of holding Indian rupees for residents and non-residents. The rupees for the first time touched a low level of 80 against the US dollar in intraday spot trading at the interbanking foreign exchange market on Monday. Okay, thank you. Come, my friend. My friend. Things were very strong. So please come and take the charge. Government to discuss IDBI sale plan with RBI. Okay. IDBI happens to be Industrial Development Bank of India. Right? Yes, Okay. Good morning. Good morning, everyone. My name is Nitish Kumar. Oh, and तेरी। Good morning. नीतीश कुमार की आवाज बहुत तेज होनी चाहिए. ठीक है, चलो. Today's headline are Government to discuss IDBI sale plan with RBI. New Delhi, the government appears. New Delhi. English में Delhi और हिंदी में दिल्ली. New Delhi, the government appears open to a constitution of bidders. तुम्हारा कोर्स क्या है? PGDM. Great. Speak loudly और थोड़ा मजबूती से. ठीक है. Today, So. today's first question. Possibility including corporate houses taking over IDBI bank through the Privatization. process may seek a longer time frame from the Reserve Bank of India to enable the new owners to reduce their stake to 26%. Last year, the banking Regulators. regulated changed norms to a lower promoters of private bank to hold up 26% stake.
in instead of 25 15% earlier. 15% earlier. After 15 years, promoters have been allowed Promoters have been allowed to pair their holding below 26% alternate 5 years. after 5 years. After AFT 5 year, years. After 5 years. Hmm. Government officials said that 74% for Foreign investment. foreign investment was allowed in the banking sector and clarify on the estate clarity on the stake reduction path will help clear the air. Government sources told Times of India. Times of India that a consortium of a bidder will also help. Write the word consortium. 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 Will also help address concern over concentration of shareholding in a few hands. Something the RBI has always been a worry of. While the RBI has not announced its decision on an internal working group's recommunication to allow corporate recommendation to allow corporate houses to enter the banking arena. Government sources indicated that the proposal has not been dropped and said a favorable view from Mumbai's Minister Mint ROAD Road will add the IDBI bank privatization process. While the IDBI bank sales plan has been pending for a long time, DIPAM has begun roadshow based on which the self-help plan will be radiated. Officials said based on discussion with the regulator, the government will work out of the plan as several issues need to be decided up front to provide clarity to potential buyers. Besides, the model may be used to privatize to nationalized bank. A decision that was announced in 2020, but the government has not moved on it, including amending the law to allow private. Write one word: amendment. What will be the meaning? Amendment. Amendment exactly change तो नहीं होगा ना, कुछ एडिशन करना, पूरा चेंज नहीं होगा, अमेंड करना उसको. अमेंड में स्टॉक ऑफ नॉलेज, करंट स्टॉक ऑफ नॉलेज है, उसमें कुछ और ऐड करना है, क्लियर, और कुछ सब्ट्रैक्ट करना, पूरा चेंज नहीं हो रहा है. क्लियर है अमेंडमेंट? फाइन. The law to allow private owners देखिए, of this ग्रेजुएशन bank. में ना सिंपल ट्रांसलेशन नहीं कीजिए हिंदी में, वो पूरा एक सेंटेंस बनना चाहिए. अमेंडमेंट संशोधन नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ. फिजिबिलिटी, अगेन कमिंग टू फिजिबिलिटी, तो फिजिबिलिटी का मतलब ऐसा होने योग्य, ठीक है. एक वर्ड में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वर्ड का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है. तो फिजिबिलिटी हैपेंस मींस कि आपको वो रिपोर्ट, वो सारा एग्जांपल, मतलब एक पैराग्राफ में उसको बात कीजिए. क्लियर? फाइन. चलिए. With a 49% stake. अच्छा, एक वर्ड है डेवलपमेंट. मतलब डेवलपमेंट, अच्छा ठीक है. विकास का मतलब किसी जगह के हिसाब से, किसी प्लेस के हिसाब से विकास को एक्सप्लेन कीजिए. हाँ, डेवलपिंग. हाँ, और जो कोई जगह है डेवलप्ड है, तो मतलब क्या हुआ उसका? सभी संसाधन उसका सारा रिसोर्स,
सारा रिसोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा है, दिस कॉल्ड डेवलप। बात समझ में आया? डेवलप मतलब सिर्फ विकास नहीं हुआ, डेवलप मीन्स रिसोर्सेज, जितनी जमीन, जितने लोग, जितना पैसा, सारी चीज वो इस्तेमाल में है, बेकार नहीं। बात समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। क्लियर? ऐसा और डिस्कशन अभी होगा, ठीक है? LIC is the largest shareholder in IDBI Bank, while the government currently holds 45.5%. The two, which make up the promoter group, will decide on the quantum of reduction in shareholding. अच्छा, अभी वर्ड बहुत सारा आया, लिबरलाइजेशन, है ना? तो फिर लिबरलाइजेशन के बाद दो वर्ड और जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 991। इसको करने की क्या जरूरत है? लिबरलाइजेशन मतलब लिबरलाइज कीजिए, आसानी। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट लोग भी प्लेयर काम करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन इज इंटायरिंग, पूरा FDI। इसको करने की क्या जरूरत है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसका मतलब 1991 से पहले जो इकोनॉमिक्स चल रहा था वो ठीक नहीं था, तो इकोनॉमिक्स को चेंज किया गया। किसको चेंज किया गया? इकोनॉमिक्स को, काम करने के तरीके को। क्लियर हुआ? और नया इकोनॉमिक्स क्या बना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दिस इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? फाइन, चलिए। On several issues from RBI. In the past, the RBI has refused to provide a separate dispensation for IDBI Bank and suggests that the rule of the game should be same for all players. The bank's stake sale has been discussed for nearly a decade now, but the government has not been able to find the right model for it. ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वॉलंटियर, एनीवन? तो हाथ देर से क्यों उधारते हो? यू लॉस्ट द बैटल। चलो, ITC, very important company. Three companies very important: HUL, Procter & Gamble, ITC. Good morning, everyone. Today's headline are ITC to deliver robust growth despite Write this word robust, very important. Robust. एक मिनट बाबू। Robust is a very technical, very word for this kind. Robust means बोलो। ROBUST. robust meaning नहीं, robust का मतलब होता है ROBUST। तुम क्या लिखे हो? रॉबर्ट, सिंगल बी। सब लाइव हो रहा है, सारी गलती तुम्हारी, सब देख रहा है। खैर, रॉबस्ट का लिख लीजिए, able to perform in any given situation. तो रॉबस्ट का मतलब सिर्फ मजबूत नहीं हुआ, रॉबस्ट मीन्स परफॉर्मेंस है, ठीक है? दैट इज की एग्जांपल में अगर हम तुम लोग के अगर लड़कों के हिसाब चले तो बुलेट हर रोड पे हर मौसम में चलता है, दैट इज कॉल्ड रॉबस्ट। स्प्लेंडर तो नहीं चलेगा, तो स्प्लेंडर एज अगेंस्ट बुलेट, स्प्लेंडर इज नॉट अ वेरी रॉबस्ट मशीन। क्लियर? फाइन। तो आपको अपने स्किल को और नॉलेज को इतना मजबूत करना है दैट यू आर एबल टू परफॉर्म इन एनी सिचुएशन। ये बात समझ में आई? दैट इज रॉबस्ट। तो रॉबस्ट आप लोग को बनना होगा। क्लियर? नहीं, सही में क्लियर या ऑल क्लियर? क्लिनिक ऑल क्लियर हो रहा है? क्योंकि एक बार और बोल दे, सिचुएशन आपको हमेशा मतलब खाली में परोस के खड़ा मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। सिचुएशन सब आसान नहीं मिलेगा। अभी हम तो परफॉर्म ठीक है, पढ़िए। Despite high inflation, Puri, Kolkata, diversified conglomerate ITC Limited on Wednesday said that the company will continue to deliver robust growth despite key concerns such as inflation. Speaking at the company's AGM virtually, CMD of ITC Sanjeev Puri said that in the
FMCG space, the firm has nurtured Nurtured. 25 brand, and the newer one will generate an annual consumer spend of rupees 24,000 crore. The company will also fortify and scale up new mega brand while investing in category of the future. He said, "Today is immensely encouraging that your company, newer FMCG business, have generated an annual consumer spend of rupees 24,000 crore. The carefully selected portfolio with substantial headroom to grow in is estimated to have the total addressable market potential of rupees 5 lakh crore by 2030, which is amongst the highest in the Indian FCM, FMCG space." He said, FMCG ITC. clear है ना? FMCG fast moving consumer goods, साबुन तेल मसाला. FMCD fast moving consumer durable, पंखा बत्ती, durable, big C and all. ठीक है? Fine. ITC launched 110 products during the year, Puri said, adding the company future ready for purpose driven business and brand are well posed to seize the opportunity and make the meaningful contribution to the national priorities. Thank you. Sir, done. Come my friend. Okay, come. This one. Only 5% techies want full-time office. Only 5%. Good morning, all of you. Today, news is Chennai. Amid attempts by companies to get their staff back to office after 2 years of a break due to COVID, a report has found that hardly 5% of tech employees are willing to return full-time to workplaces. The NASCOM BCG report reveals that hybrid working model was the most Write one word, preferred hybrid. Hybrid. Choice. HYBRID. एक मिनट. HYBRID. Hybrid. Hybrid means the combination of more than two or two. तो आपको स्किल के हिसाब से हाइब्रिड बनना होगा. स्किल के हिसाब से, हुनर के हिसाब से हाइब्रिड सिर्फ एक स्किल नहीं, दो स्किल. क्लियर? और दोनों स्किल ऐसा आप लोग हासिल करेंगे कि वो आपको रॉबस्ट बनाए. वो आपको रॉबस्ट. फाइन. रॉबस्ट आप इसलिए बनिएगा सो दैट कि आप फिजिबिलिटी कर सके. रॉबस्ट क्यों? तो रॉबस्ट कैसे होगा? हाइब्रिड से. हाइब्रिड का मतलब मोर देन वन स्किल. क्लियर? फाइन. एक सेकेंड. तो फिजिबिलिटी, एक मिनट, स्किल, हाइब्रिड, रॉबस्ट. रॉबस्ट हो गए तो फिर फिजिबिलिटी होगा. फिजिबिलिटी बेहतर होगा तो फिर माइलस्टोन कवर होगा. अचीव. सीरीज समझ में आया? वेरी सिंपल. ऐसे को चीजों को, ठीक है. माइलस्टोन बेहतर होगा. माइलस्टोन तो ज्यादा चीज आपके जुरिस्डिक्शन में आएगी. ज्यादा चीज आपके जुरिस्डिक्शन में आएगी. मतलब 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, मोर असाइनमेंट्स. क्लियर हो रहा है? स्केल से सीरीज बन गया. ये तरीका याद करने का. ठीक है? फाइन. चलिए. was the most preferred choice with 20% सीरीज अच्छा बनाना. opting for it, while 25% of employees wanted to continue remote working completely. The report was released at the NASCOM Further Future of Work 2022 Summit in Chennai on Tuesday. When given a choice on how people in digital fields want to work, 20% opted for a combination of remote and on-site work from office, followed by 25% preferring completely remote and just 5% choosing the completely one on-site option, stressing that hybrid is the way forward. It's a different element, including
designing कहाँ पे? workplace, Where it is? Redesigning. redesigning Workplace. workplace and expanding access to talent pool are currently being experimented by organizations to shape the new work model. On the other hand, employees also mix in the formal and social interaction, in-person collaboration, or brainstorming. In-person formal Brainstorming. brainstorming. Write this word, brainstorming. Brain, 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 storming. हाँ, मीटिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. जो भी मीटिंग होती है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. In-person formal meetings and better work set up according to the report. The report is based on a survey conducted during the third quarter, July-September of 2021, involving about 2 lakh respondents from across the globe. Of these, 500 were from India, said BCG Managing Director and Partner Nitin Chandalia. The way companies define their version of hybrid operating model, which will actually become the core part of the employee value proposition, where we actually see a time when people will switch jobs for a better or more refined hybrid working model and not just compensation, he told TOI. ठीक, थैंक यू. Thank you. टाइम्स ऑफ इंडिया. Types of ठीक, थैंक यू. चलिए, तो वर्ड मीनिंग का सीरीज समझ में आया आपको? ठीक है, एक वर्ड आप कलेक्शन लिखिए और उसके बाद उस सबको जोड़िए. ठीक है, ये सारा पैरामीटर होगा. ज़्यादा चीज़ डिसीजन में आपके आएगी. ठीक है, इसका मतलब है ज़्यादा रिसोर्स डिप्लॉय होगा तो डेवलपमेंट होगा, तो जाकर के डेवलपमेंट मीन्स ज़्यादा रिसोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? चलिए, टू बी कंटिन्यूड.